Okay, now we go over to our page number 95 and do this exercise, that is prepare a game all about bugs. You're going to write questions for a game. You are A or B. Look at ants or on page 90, and B's look at spiders on page 90. Write four questions starting with does, do, what do, how do, how many, and how many, right? This is a language take one bug. What does a bug eat? Lots of bugs. What do bugs eat, right? Remember what to use with the do and what to use with the does. Does and do, they are used with what? For a single, once we are using a single pronoun, then we use the word does. And once we are using um, plurals, then we use the word do. Because it is bugs, so we write do. When it is a, it is does. Okay. So now let's practice that how will we write these questions. मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, आप इस तरह के और भी बना सकते हैं, फिर इसके कार्ड्स बना के और इस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है. Say for example, starting from does an ant eat leaves? Does an ant have a tail? Does an ant build a home? Does an ant carry its food to its home? The next is starting with do. Do the ants eat leaves? Do the ants build a home? Do the ants have a tail? Do the ants live in a crop? Now starting with what does. What does an ant look like? What does an ant use to smell? What does an ant use to communicate? What does an ant use to feel? And now we do with the what do. What do the ants eat? What do the ants do to find their way home? What does a spider eat? And what does the spider use to make its home? Now we go over to how do. How does an ant taste its food? How does a spider live? How does a web look like? How does an ant build its home? Now we go to how do. How do the ants taste their food? How do the spiders live? How do the spiders make their web? How do the ants build their home? Next, how many? How many legs does a spider have? How many eyes does an ant have? How many ants live in a group? How many spiders live in a web? Okay, ये देर आर फोर, मैंने सब के लिए चार चार बना दिए हैं. आप अभी इनके कार्ड्स बनाएंगे और कार्ड्स बना के फिर आप ये बाकी गेम खेलेंगे, ठीक है ना जी. प्ले ऑल अबाउट पग्स, ठीक है. प्ले इन टू टीम्स.
टीम्स में टर्न टू चूज़, ये सारा आपने इस तरह ये खेलना है। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पर जाके हम रीड करेंगे सर्टन थिंग्स, ठीक है। फिर आज हम रीड करेंगे, कल हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। Read and response. Before you read, look at the picture. Who are the characters in the story? What do you think happens? Now read the story. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि there is a frog, there is a snake and there is a small ant. अब हम देखते हैं कि क्या होता है. Story is this story is from Mexico. It is about a little ant. It was autumn. The weather was getting cold. Little ant said, I'm going outside to play. Come home soon, said little ant's mother. It's getting cold outside, but our home under the ground is nice and warm. Little ant met a beetle and a worm. Hello, said little ant, let's play. Okay, said the beetle and the worm. They played and played together. The wind began to blow. Little Ant began to shiver. It's cold, she said. I have to go home. Little Ant started to walk home. The wind blew harder and the little ant shivered. A big leaf fell on her. Look at this. पत्ता बहुत बड़ा सा उस पे एंट पे गिर गया. हाँ? हेल्प सेड द लिटिल एंट, आई कांट मूव. लिटिल एंट ने कहा भी मेरी को मदद करे, मैं मूव नहीं कर सकती. लीफ प्लीज गेट ऑफ मी, सेड द लिटिल एंट, आई हैव टू गो होम. बट द लीफ डिडंट मूव. उसने पत्ते को कहा भी पीछे हट जाओ, मैंने घर जाना है. पर लीफ तो मूव ही नहीं किया. हाँ. लिटिल एंट कॉल्ड टू अ माउस. लिटिल एंट ने एक चूहे को कहा, माउस माउस आई नीड हेल्प, प्लीज़ लिफ्ट अप द लीफ, इट्स कोल्ड एंड आई हैव टू गो होम. उसने कहा प्लीज़ ये पत्ता मेरे से हटा दो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और मैंने घर जाना है. बट द माउस सेड, सॉरी लिटिल एंट, आई हैवंट गॉट टाइम टू हेल्प, आई एम वेरी बिजी. देखिए ना, माउस बड़ा रूड था. उसने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. सो लिटिल एंट कॉल्ड टू अ कैट, cat, cat, I need help. Please chase the mouse. Mouse, please lift up the leaf. It's cold and I have to go home. उसने अभी जो है ना बिल्ली को आवाज़ दी कि प्लीज़ जो है ना प्यारी बिल्ली, तुम जो है ना चूहे के पीछे दौड़ो ताकि ये डर के मेरा पत्ता हटा दे, इसको डराओ ज़रा. तो but the cat said, sorry little ant, I haven't got time to help, I'm very busy. कैट ने कहा भाई 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 मेरे पास तो टाइम नहीं है, अभी मैं तो बहुत बिजी हूँ. हाँ जी. सो लिटिल एंड कॉल्ड अ डॉग, डॉग डॉग आई नीड हेल्प. उसने कहा कुत्ते, प्यारे कुत्ते, मुझे जो है ना आप डियर डॉग डॉगी, मुझे प्लीज़ जो है ना मेरी मदद करो. प्लीज़ स्केयर द कैट. ज़रा स्केयर का मतलब होता है डराना. तुम स्केयर कर दो कैट को, उसको डराओ. एंड कैट प्लीज़ चेज द माउस. और कैट तुम जो है ना माउस के पीछा करो. और माउस प्लीज़ लिफ्ट अप द लीफ. और माउस प्लीज़ तुम मेरा पत्ता उठा दो. इट्स कोल्ड एंड आई हैव टू गो होम. बहुत ठंड लग रही है, मैंने घर जाना है. बट द डॉग सेड, सॉरी लिटिल एंट, आई हैवंट गॉट टाइम टू हेल्प, आई एम वेरी बिजी. डॉग ने कहा भाई आई एम सॉरी भाई, मैं तो आई एम वेरी बिजी, आई कांट हेल्प यू. वो बड़ी परेशान थी बेचारी. अफली एक मक्खी जो थी, वो लिव्ड ऑन दी डॉग, जो कि कुत्ते के ऊपर ही उसकी गर्दन पे रहा करती थी. उसने हर्ड लिटिल एंट कॉलिंग फॉर हेल्प. उसने सुना लिटिल एंट को कि जी वो मदद के लिए पुकार रही है. द फ्ली इज़ ए कज़न ऑफ एंट. जो मक्खी होती है ना, वो कज़न होती है इसकी एंट की. तो उसने कहा डोंट वरी कज़न एंट. उसने कहा मेरी देखो कज़न एंट, डोंट वरी. फ्ली ने कहा डोंट वरी कज़न एंट, कॉल्ड द फ्ली. फ्ली ने कहा जो है ना लिटिल एंट, प्लीज़ आप परेशान ना हो, आई कैन हेल्प, मैं आपकी मदद करूँगी. आई विल बाइट दिस डॉग, मैं इस कुत्ते को काटूँगी.
सो द फ्ली बिट द डॉग, और कुत्ते ने उसने कुत्ते को काटा। उसने ज़ोर से काटा। द डॉग येल्प्ड, डॉग ने किया एंड स्केर्ड द कैट, और बिल्ली भी डरी, बिल्ली भी डर गई। द कैट टर्न्ड एंड चेज़ द माउस, बिल्ली मुड़ी और उसने माउस के पीछे दौड़ना शुरू किया। द माउस रैन टू द लिटिल एंट एंड लिफ्टेड अप द लीफ, माउस दौड़ दौड़ा गया और उसने जाके पत्ता उठाया जिसके नीचे वो एंट छुपी हुई थी, फंसी हुई थी बेचारी। थैंक यू कज़न फ्ली कॉल्ड द लिटिल एंट, उसने बेचारी ने कहा, लिटिल एंट जो थी उसने कहा कि प्यारी मक्खी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। द लिटिल एंट रैन बैक टू हर नाइस वार्म होम अंडर द ग्राउंड, फिर उसके बाद जो छोटी एंट थी ना, वो दौड़ती दौड़ती अपने घर में चली गई जो कि ज़मीन के नीचे था। इट वॉज अंडर द ग्राउंड, सो इट वॉज, यानी ये ज़मीन के नीचे था और वो बड़ा गर्म भी था उसमें। ठीक है, ये देखिए अपने घर में चली गई, जाके सोफे पे बैठ गई। आई एम बैक मॉम, लिटिल एंट्स कॉल्ड, उन्होंने कहा मामा मैं घर वापस आ गई हूँ। हेलो लिटिल एंट सेड हर मदर, आई एम ग्लैड यू आर होम, मैं खुश हूँ कि आप घर पे आ गई। सो देखो अभी लिटिल एंट वापस अपने घर आ गई थी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको इसकी एक्सरसाइज भी करा के दिखाएंगे। ठीक है जी, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी हमारी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।